Today's session is regarding 2024 strategy, like those who will be appearing in 2024. So if they start right now, how they can prepare. So basically, you people have around 18 months. So if you take January in, and if you think that in 2024, around May, June, the paper will happen, prelims will happen. So you have roughly 18 months. Okay. So we will be discussing regarding that how you can have a comprehensive mains plus prelim strategy in these long 1.5 years. So what the first thing that you have to do is, and one more makeup at the end of the session. So whoever wants to put up the question in chat box may do, but please ask the question after I have spoken about this whole session. So starting, if somebody is starting now, your first thing should be to bring the syllabus and understand this whole exam. Okay, like you have to understand the exam in the manner that what UPSC has given, what all points regarding, understand this whole exam, and that notification, whatever notification comes out, just read it, understand about the whole exam, ki kaun sa paper kitne marks ka hota hai, or which paper is qualifying, what is the syllabus of every subject. So understand that in one reading. Now what you have to do is, you have to start with your optional. You have to select your optional. Those who haven't selected their optional, please select your optional. And the criteria for selecting should be, the first criteria should be your interest. Whatever interests you should be the optional. Yesterday I met one aspirant. She was very confused between her optional. She wanted to take Hindi literature, thinking that Hindi literature will help her in Hindi language. That is not the thing, that is not the criteria you should think of. You should not think this way, ki this optional will help in this manner, this will help in this manner. Your first thing should be your interest, because you have to live with that optional for many years, like at least 2 years, and you have to read that optional for at least 60% of the time. So be very sure that whatever subject interests you, that should be your optional. Okay. Now, secondly, when you have chosen it, then you have to understand the sources about it. So different optionals have different book list. Okay, I can tell about mine that I will discuss in the later half. So what you have to do, you have to understand the book list by whatever toppers you are following. You understand them, buy those books, and start with your optional. I would say if you are appearing for 2024, then please start with your optional first. If you are able to complete that optional in 5 to 6 months maximum, then half of your task is done. So by end of June, to say end of June of 2023, if you are able to do the complete reading of your optional, then a huge task is done. So how you have to go about it is, first you have to read. First is your syllabus. Okay, that is the basic thing that you have to do. First is syllabus. Understand your syllabus very well. And start one unit at a time. So do one unit, do the previous year questions of that particular unit, then only I will say that that topic is complete. So take for example, in my optional, if there is a topic of evolution of sociology, or sociology as science, or any methodological research, then I will first read that topic from whatever source have been recommended. Then I will go to previous year question. I will see what all types of questions have been asked in previous years. I will solve them, and then only I will call my one topic complete. So you have to do this across paper 1 and paper 2, and try to do it by at least June. See, different options might take different times. Anthropology can be completed in 4 months, but maths optional can take even 6-7 months. So that is your timeline that you will understand, but roughly by June, try to end it. So first thing is your optional. Now, when you are doing your optional, every day you have to also do your newspaper. Newspaper you have to start on the very first day. So whoever is starting this whole preparation and aiming 2024, please start reading newspaper from now itself, from the very first day itself. And newspaper can be The Hindu, The Indian Express. These two are the best in the market. I used to do The Hindu. Please do that one newspaper every day.
So whoever is a beginner will first face a lot of issues in understanding newspaper, because you do not know what things have been going on, है ना, what is the national, what these national issues are, what international issues are. So you don't have to panic about it, you don't have to get bogged down by this. Gradually you will know what things are going on. Okay, what you can do is, when you start your newspaper, you can do some background research of that topic. Say for example, right now, you know, India China, some issue is going on in Arunachal Pradesh, right? So what now, when you're a beginner, you don't know what that issue is, so you go and just google it that what is the India China relation in past, what were the issues in Tawang region, what were the issues in Aksai Chin region in north. So understand these things well. Okay, once you have done this activity, now you do not have to do this again and again. Now you know India China forever. Now let's take another news comes up. You know, these days executive and judiciary are having a lot. So collegium system keeps coming. So now since you are a beginner, you don't know what is collegium system. So go Google it and understand what is collegium system and have a rough idea so that you can understand that news article. Okay. So this way you have to do some background research of that particular topic, just 5-10 minutes. You don't have to give whole day for it, just 5-10 minutes. Whatever top 3 articles come, you just have to read it and you're done. Okay. This way you have to do your newspaper. So, and then I will say that when you have done 2-3 months of, optional and newspaper, then you can pick one GS subject. Like for example, if you are doing January, February and March, आपने अपना optional को start कर दिया, you are doing your newspaper also, then now gradually pick up a subject of GS. You can pick up polity, ठीक है? Polity में now again, if you're a beginner, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में problem होगी. So what you can do is read 11th class, the Indian Constitution book, NCERT of 11th class आपने पढ़ा, 10 दिन में आप उसको पढ़िए, टारगेट बनाइए, 10 दिन में पढ़ लिया. Now pick up Lakshmikant, and you have to give 1 month approx to these bigger subjects like polity, economy, environment, geography. ये सब आपके थोड़े बड़े subjects हैं and they need a lot of conceptual clarity. So give 1 month to these subjects. When I started doing my newspaper, I used to do it for even 4 hours. Sometimes I used to do for 4 hours because I didn't know at all. So I had to Google a lot. I had to understand the background of it. So even if it's taking 3 hours, no problem. But you have to invest your foundation in newspaper very well. After a period of 3-4 months, you will realize कि news repeat हो रही है. Things will be getting repeated. तो आपको तब इतना time नहीं लगेगा. अभी starting के 6 months आपको maybe you will be facing a lot of problems and you will be taking 3 hours. So that's fine, totally give it. Okay, and someone is asking that do we make notes of newspaper? So starting में I will say that newspaper current affair की notes you can start making from after 10 to 15 days you have invested in newspaper, because in 10 to 15 days आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा. After 10 to 15 days you will you will get hang of things. So then you can start making notes, and notes will not be perfect in the first go. So don't worry about it. Okay, notes gradually आपकी perfect बनती जाएगी. When you will understand कि कोई question किस type से आता है, कि previous year question आप देखोगे, आप अपना syllabus देखोगे, then only you will understand that how you have to make your notes in a better manner. But start making notes from 10 to 15 days after reading newspaper. Okay. Now coming back to the topic. So आपने March में polity कर लिया. Now coming to April, you can target economy. So economy आपने NCERT पढ़ ली, macroeconomics की, and if you want, you can also do 11th class की NCERT for economics, Indian economic development, I think something like that. So आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आपकी इकोनॉमी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई. So now when news like repo rate, reverse repo, things like fiscal policy, things like monetary policy will keep coming in your newspaper, now you will understand them well. So choose your subjects in a manner, conceptual first, factual at the later. ठीक है, तो आपने इकोनॉमी को थोड़ा बहुत समझ लिया, 1 महीना देके आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए. Now you can pick
in the next month you can pick your geography, because geography also requires some concepts. खास करके जो physical geography आपकी, like climatology है, oceanography है, these things require a lot of concepts. So this also give adequate time, and the month of May is perfect. You know, March, April, May, हाँ May में आप geography उठा सकते हो, आराम से आप करिए. अब geography आपने NCERT से करना है, 11th 12th NCERTs, 2 each. And I also did Raj Tandil ma'am's videos, जो मृणाल सर के चैनल पे है, मृणाल ज्योग्राफी. So that also I did. You can target one video every day, that you can do. And then coming to your environment, आप environment को भी 1 महीना दीजिए पूरा, I will say, because Shankar IS की जो book है, that I will recommend, and that takes a lot of time, because that book is very technical. But I won't say that don't do that book. I will say that definitely do that book. There are a lot of noises in market कि अब वो book relevant नहीं है and all, but I will say there's no alternate to that. And also that book gives you a lot of knowledge base, so even if questions are not directly coming, it will help you in elimination. So please do that book very well. Okay, so आपका environment हो गया. अब आप pick कर सकते हैं अपने factual subjects like ancient history, modern history, your medieval, your art and culture, because these you know subjects are not very conceptual. History हुई in some manner, you have to now ratify it. Ancient में आपको करना है आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, एंड देन medieval में आपको करना है सतीश चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी. Plus, not do Nitin Singhania sir's book. People find it good, but I don't know. I only did art and culture NCERT. You can do that. And then give at least 20 days to these subjects, like 20 days ancient, 20 days medieval. Then again, I had told in previous sessions also that you have to simultaneously do ancient की R.S. Sharma and fine arts की book. अगर आपने मान लो Indus Valley Civilization पढ़ा अपने R.S. Sharma से, then at the same time read Indus Valley Civilization from your fine arts की book. If you read Gupta period from R.S. Sharma, read Gupta period from fine arts की book. Okay, this you have to do for both R.S. Sharma and Satish Chandra. Do simultaneously, so that you have 360-degree understanding of that particular phase. Now, coming to modern India. So now you can give 1 month to modern India, because Spectrum takes 1 month. It's a huge book. So आप आराम से Spectrum पढ़िए, 1 महीना आराम से दीजिए. तो ये हो गया. Now science and tech का there's no such book that I did. कोई बोल रहा है मैम फिर बताइए यार. एक्चुअली सारी लिस्ट मेरी जो है ना सोर्स लिस्ट, वो सिविल्स डेली के लाइव सेशन पे है, आप वहां जाके देख लेना. तो आपका जो मॉडर्न इंडिया है, यू हैव टू डू फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड डू दैट बुक वेरी रिलीजियसली, कवर टू कवर, बिकॉज दैट इज वन बुक जहां से आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. एक आध ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मॉडर्न इंडिया में कवर नहीं हो पाते, उससे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Do that book very very nicely. पहले बहुत heavy लगती है that how will you remember a lot of things, but जब आप उसका repeated revision करते हैं that becomes very easy. Okay, do that. ये हो गया. Then comes to science and tech. So I did not do any book per se, but I attended my classes. तो मैंने क्लास की जो notebooks थी that I referred for theory part, like आपको you need to know some theory of space, you need to know some theory of biotechnology, some theory of nanotechnology. So these things were covered well in my classes at Vajiram. I did that. आप अपनी क्लासरूम से जो भी आपको पढ़ा रहे हैं साइंस एंड टेक, आप वहां से करिए. और उसके बाद you have to do this thing, your daily newspaper में जो साइंस आ रहा है ना, that is very important. Try to Google it. Like आज ही कल के जो संडे के न्यूज़पेपर में था, I'm again forgetting that article. कुछ तो साइंस से रिलेटेड अच्छा आर्टिकल था, एकदम ऊपर में दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा अच्छे से समझो उस चीज को कि क्या क्या बात हो रही है, what technology is being referred to, what this technology can do, pros and cons of that technology. तो थोड़ा सा जो भी टेक्नोलॉजी की बात हुई है उस आर्टिकल में, प्लीज ट्राई टू go in depth, a little in depth. ठीक है. So this way you have to do. This way हमने 6-7 महीने में हमने मेजर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, राइट. नाउ यू हैव टू पिक दिस
जो माइनर सब्जेक्ट्स है मेंस के रिलेटेड, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडियन सोसाइटी है, तो इसको आप टारगेट करो कि पूरे जो 3 महीने हैं आपके, दिसंबर तक आप वाइंड अप कर देंगे सारे सब्जेक्ट्स को, और इसमें इतना लोड नहीं लेना होता है। लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। आप आई यूज्ड टू डू फ्रॉम विजन आईएएस दिस मटेरियल, सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो 10 दिन में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, 10 इज मैक्सिमम। देन 10 दिन में आपका इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी आई डिड फ्रॉम अशोक सर आईपीएस बुक, it's a Tata McGraw-Hill publication. That book I did for internal security. Then coming to Indian society, I did not refer any book because sociology is my optional. But what you can do is for Indian society, you can read 11th की sociology की NCERT to know the basics of Indian society. What all what all structures are in Indian society, what all institutions are in Indian society, ये आप वहां से समझ पाएंगे। And then you have to understand Indian society daily from newspaper. Whatever things are coming in newspaper, वो आपको relate करते जाना है। Okay? जैसे देखो, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक मिशन परिवर्तन मिशन, which it is hiring women bus drivers in DTC. So this is kind of डायरेक्ट विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। वो जो सो कॉल्ड मेन की जॉब थी, वहां पे नाउ वुमेन आर एंटरिंग, सो पीपल आर सीइंग देम, एंड नाउ पीपल, इफ दे परफॉर्म वेल, पीपल विल नाउ हैव स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट इन वुमेन ड्राइवर्स, है ना। सो दिस इज वन वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो आप ये सब चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आप सोशियोलॉजिकल एंगल से सोचिए, है ना। ये चीजें आप न्यूज़पेपर से नोट डाउन करिए। फिर क्या बचता है, गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस इन इंडियन सोसाइटी, सॉरी गवर्नेंस फ्रॉम GS2। गवर्नेंस के लिए आई डिड नॉट डू एनी मटेरियल अलग से, बिकॉज गवर्नेंस इज एवरीडे इन न्यूज़पेपर। गवर्नेंस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन लक्ष्मीकांत, है ना। सी लाइक दीज डेज तमिलनाडु में गवर्नर एंड गवर्नमेंट का टसल चल रहा है। You have read these things in Lakshmikant before, कि what are the powers of governor, what is the power of council of minister, ये सारे आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं। Now what you're seeing in newspaper is just application of that. So you do not have to do a lot of different things in governance, because everything you have read, everything comes in newspaper. आपको थोड़ा effort कहाँ डालना है, topics like education, health, human resource, poverty, hunger, इस पे you have to put some effort, and that effort again will come from newspaper. You have to collect certain data, certain surveys, certain index, तो ये चीजें आप कलेक्ट करिए, ताकि आपका ये वाला जो पार्ट है, दैट इज वेरी दैट कैन बी हैंडल्ड वेरी ब्यूटीफुली एंड वेरी इजीली, दैट यू कैन डू। यस, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी हैं, स्कीम्स हैं, जो आप उनको नोट डाउन करिए और उन्हें कनेक्ट करते रहिए इन चीजों के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा गवर्नेंस हो गया। फिर GS3 में इकोनॉमी हमने कर लिया, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ कमिंग टू GS4। अगेन GS4, ये जितना भी पार्ट है आपका, एग्रीकल्चर के लिए कोई बोल रहा है, एग्रीकल्चर आई बिलीव दैट गेट्स कवर्ड इन योर इकोनॉमी वाला पार्ट, इन एग्रीकल्चर गेट्स कवर्ड देयर। If you watch those Brunal sir's videos, he will cover everything in agriculture as well. For that you have to read Brunal sir's videos. अगर आपकी कोचिंग में अच्छे से हो रहा है तो इतना बर्डन नहीं लेना है, डबल बर्डन, बट आई डिड मृणाल सर के वीडियोस सारे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अगेन देयर इज नो बुक दैट इज रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू रीड एनी थिक बुक, जस्ट कीप फॉलोइंग न्यूज़पेपर। एंड किसी भी एक मैगजीन, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन है मान लो, या सिविल्स डेली की मैगजीन है, किसी की भी मैगजीन है, उससे आप किसी भी कंट्री का एक बैकग्राउंड समझ लो। लाइक इंडिया चाइना रिलेशंस 20 years ago, आज तक उन्हें ट्रेस करो। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आज तक कैसे है, तो एक आइडिया होना चाहिए। यू शुड हैव दैट आइडिया दैट व्हाट दिस रिलेशन लुक्ड लाइक 10 years ago, 20 years ago, ठीक है। या ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द एजेंडाज ऑफ ब्रिक्स पहले, व्हाट वर द एजेंडा ऑफ G20 पहले, और अब कैसे इवॉल्व होता आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू इंस्टीट्यूशंस कमिंग अप, लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है,
इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा एनालाइज करिए जो अब नए नए आ रहे हैं। तो इसमें आपको सिर्फ न्यूज़पेपर फॉलो करना है एंड कीप मेकिंग नोट्स लाइक इंडिया यूएस आप एक जगह एक पेज में लिख लीजिए। फिर कोई भी एग्रीमेंट होता है कीप राइटिंग डाउन देयर, ठीक है, या इंडिया यूके आपने लिख लिया, अब जो भी उसके अंदर हो रहा है कीप राइटिंग डाउन देयर, ठीक है। एंड देन फाइनली व्हेन यू हैव वन पेज नोट्स, आप उसमें से कुछ चीजें हटाएंगे जो रिडंडेंट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है। दिस वे yes, for world history and post independence, again I did not do any book, I only referred vision IS material. Those are very thin books that I did or at least 3-4 times, और उससे काम चल जाता है because in world history if question comes ऐसा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते तो वो ऑप्शनल वाला भी नहीं सॉल्व कर सकता उस चीज को, तो डोंट वरी अबाउट दैट। whatever you have been given from your coaching institute, or if you're following some other coaching ka material, do that very religiously at least 2-3 times, that will suffice, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको बेसिकली दिसंबर तक पूरा अपना ये खत्म करना है। यू हैव टू गेट अंडरस्टैंडिंग, गेट रीडिंग्स एंड गेट टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब इसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, यू विल नॉट बिकम एन एक्सपर्ट, यू विल नॉट बी एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, you will not score above 100 in prelims and you will not score above 100 in mains as well. तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने हर चीज की एक दो रीडिंग ही करी है। यू हैव जस्ट डन 1-2 रीडिंग्स। व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, जब जनवरी आता है, जनवरी ऑफ 2024 से लेके मई या जून जब भी पेपर है आपका 2024, इस पूरे 5 महीने में यू हैव टू डू रिपीटेड रिविजन्स, है ना। जो मैंने 60, 45, 25, 15 एक स्ट्रैटेजी बताई थी, दैट आई विल रिपीट अगेन। You can write down also 60, 45, 25, 15, 15, 15. So 60 basically is जनवरी फरवरी आपके पास 60 days हैं, आप एक रीडिंग सबकी मार लोगे। देखो दिसंबर तक आपने हर चीज कंप्लीट कर दी है, राइट। दिसंबर तक यू वर प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड, you have read every subject at least once and you have analyzed the previous year questions of those subjects at least once, okay. Now comes January of 2024. Now January, February of 2024, you have to read one more reading of every subject of prelims. Now I believe you can keep mains because you are attempting first prelims, then I think your target should be at least 5 months of prelims because prelims is getting dicier every time. So January, February आपने 60 days एक और reading मारी, उसके बाद starting from 1st March till 15th April there are 45 days, so you have to do the second reading in these 45 days, okay. Then 15th April to 10th of May there are 25 days, do the third reading, and 10th May सिर्फ 25 May, मान लो अभी 25th May को prelims है, right, तो 25th May तक 15 दिन है, आप 4th reading करिए। So this way you are prelims ready in the January 2024 से लेके मान लो May 2024 को आपका एग्जाम होता है, उसमें आपने 4 रिविजन कर लिए हैं अपने, है ना, 60, 45, 25, 15 स्ट्रैटेजी से आपने 4 रिविजन कर लिए। सो यू आर परफेक्टली फाइन टू गो फॉर अटेम्प्टिंग योर प्रीलिम्स। This is the whole strategy about your mains plus prelims if you are attempting 2024. So I'll summarize it here. If you are starting now, you have to choose your optional, ठीक है, आपने optional choose किया, आप उसको आपको एटलीस्ट जून तक कवर करके रख देना है, ठीक है। डेली आपका जून तक ऑप्शनल चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ में करना है। Then you have to daily do newspaper, that can be Hindu or Indian Express. Then you have to pick every subject and give adequate amount from 1 month to 10 days also, ठीक है। पहले conceptual subjects like polity, economy, geography, then factual subjects like ancient, medieval, modern, ठीक है। This way and then comes your जितने भी मेंस के सब्जेक्ट्स हैं like IR, internal security, ethics, जो भी है, आपने दिसंबर तक सबको वाइंड अप कर दिया, ठीक है। Then January 2024 से आप full prelims mode में जाते हैं, then you are doing 3-4 revisions of that and again attempting prelims, ठीक है। उसके बाद का आपका फिर prelims क्लियर होता है नहीं क्लियर होता है वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this was from my side. Now you can ask your questions. Good evening, ma'am. Good evening. Tell me your
Hello. Yes, Am yes. I audible? Yes, ma'am. Ma'am, is it to go with the PIB news daily? See, I don't think it's a lot relevant, because whatever good news are there, relevant news, that will definitely come up in your newspaper, and that will Okay. come up in your monthly magazine. So don't do double effort. I did not do. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Next question. Good evening, madam. Good evening. Ma'am, this is Vishnuvardhan. Ma'am, a small doubt, ma'am. Over a period of time after reading newspaper, can we rely completely on the current affairs or the magazines which are being published by the So Civilsdaily, ma'am? you do newspaper till your last day, till your name doesn't come up, or you have to do newspaper. You cannot in magazine. Yes, You ma'am. can definitely implement it, but you cannot leave. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. My name is Amit Kumar. Hello. Hello. Yes, Yes, yes. ma'am. I am preparing last 2 years. Ma'am, जैसे कि आपने some books suggested, but ma'am, I read लक्ष्मीकांत in 4 times. But ma'am, एक जो मेच्योरिटी लेवल होता है, मतलब समझने का, और मैम जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, मैम उसको टैकल करने का मैम यही प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए, मतलब एक टॉपिक वाइज जैसे प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये टॉपिक तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट मैम क्वेश्चन को टैकल किस तरीके से किया जाए। मैम प्रीलिम्स के लिए के भी बहुत कॉम्प्लेक्स और एक तरीके से कहा जाए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ तो सोल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को मतलब कैसे टैकल किया जाए। अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे ही इशू रहता है। देखो, if you are reading Lakshmikant very well and if you are able to relate those things in newspaper, फिर कुछ बचता नहीं है। Concepts आपके तभी clear होंगे जब you have really understood that thing. मान लो कि जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, सो इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं दो ऑप्शंस में। तो चीजें तभी समझ आएंगी, देखो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस विल बी करेक्ट ओनली व्हेन यू हैव लिटरली अंडरस्टूड द एग्जैक्ट मीनिंग, द एग्जैक्ट थिंग अबाउट इट। ये कब होगा? ये होगा रिपीटेड रिविजन से। 4-5 बार लक्ष्मीकांत से भी काम नहीं चलता है। लक्ष्मीकांत इज वन बुक which literally you have to do 6-7 times, honestly speaking, तब जाके, क्योंकि वो इतने डेप्थ में है चीजें, इतनी निटिग्रिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो you have to recall these things very pinpoint, and that will come by repeated revision, and whenever things come up in newspaper, please understand it. जैसे अभी गवर्नर का टसल चल रहा है, तो आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हैं तो try to relate from what is going on. When there is tussle between judiciary and executive over collegium system या over basic structure, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कुछ कमेंट किया, तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है, उन चीजों को आप रिलेट करिए अपने स्टैटिक से, ठीक है? तभी ये चीजें क्लियर होती हैं। अब इकोनॉमी है, इकोनॉमी में काफी बार बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन में बहुत ही मतलब इन डेप्थ चाहिए होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट यू विल गेट व्हेन यू हैव लिटरली अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग इन इकोनॉमी बाय न्यूज़पेपर। एवरीडे अंडरस्टैंड, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है कैसे हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेपो रेट बढ़ा तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स का क्या हो रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ओके, next. Good evening, ma'am. This is Navya. Good evening. Ma'am, coming to the history NCERT, so new NCERTs, I'm talking about new NCERT, it's a bit confusion. So we need to study with new NCERTs and the standard books also for of every subject? See, there's a lot of debate about old and new. I can only tell about myself. I only did old. So I have not even seen new. I cannot comment upon it. But a lot of toppers do new also. So आपको choose कर लो आप between old and new. Do one. I think most of the things are covered. और अगर आपको इतना ही problem है, तो what you can do is, if you have read say new, तो ठीक है, अब ओल्ड को उठाओ और उसमें क्विकली देख लो, जो चीज एडिशनल है वो अपने न्यू में लिख लो। ओके, हेलो मैम।
Good evening. One person, please. Am I audible, ma'am? हाँ. Yes, ma'am. This is Apoor. हाँ. Ma'am, I started my preparation 4 months ago. मेरे साथ ये हो रहा है जैसे मैं कोई भी टॉपिक कर रहा हूँ ना तो उसकी सेंस ऑफ फाइनलिटी नहीं आ रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक में मतलब ऐसे हैंगिंग सिचुएशन हो रही है। Because you have only मतलब 4 hours, 4 months to this preparation ना, कैसे फाइनलिटी कैसे आ जाएगी 4 महीने में? नो मैम, लाइक इन्फ्लेशन मैंने किया कुछ भी, हाँ. तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आया, वो बिल्कुल हल्का सा जैसे कोई डेफिनेशन समझ आई है उसकी, ऐसा लग रहा है। मतलब किया मैंने पूरा है। देखो कहाँ से पढ़ा आपने, कैसे किया? I did it from Zulfikar sir's video. अच्छा ठीक है, जो भी वीडियो है मतलब जहाँ से भी किया आपने, अब वो XYZ पर्सन या कोचिंग विल डू जस्टिस विद इट, आई होप दैट, ठीक है? तो बाद में आपको उसको ग्रास्प करना है, visit that again, understand it and again try to do questions on that. जो क्वेश्चन करके अंडरस्टैंडिंग आती है ना, वो कहीं से नहीं आती है। आप अपना क्वेश्चन उठाओ और देखो आज तक इन्फ्लेशन पे क्या क्या पूछा है उसने, डू दैट। सेकेंडली, व्हेन न्यूज़पेपर में आपको डेली इन्फ्लेशन की न्यूज आती रहती है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, आरबीआई कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से कुछ कर रही है, देन बाहर यूएस फेड बैंक कुछ करता है, उससे इन्फ्लेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सब चीजों को रिलेट करते चलो एवरी डे, तभी समझ आएगा। और द थिंग इज 4 months ना बहुत ही कम है अभी, वुड से अभी आपका फाउंडेशन बन रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर मैं सिलेक्टेड हूँ तो मैं भी आज अगर बैठी हूँ तो आई कैन नॉट से कि इफ आई नो दिस थिंग फुल्ली और नॉट, बिकॉज पूरी प्रेपरेशन इज अ प्रोसेस। यू विल कीप स्ट्रेंथनिंग योर कॉन्सेप्ट्स एवरी डे, इट डजंट एंड एनीवेयर। अगर मैं मान लो सिलेक्ट हो भी गई हूँ तो मुझे भी आज बहुत सी चीजें नहीं आ रही या नहीं आती अच्छे से समझ, तो इट्स अ प्रोसेस। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ये इसमें मास्टर हो गए, और मास्टर होना भी नहीं है, जितना चाहिए उतना करो, आगे बढ़ो। प्लीज अदर पर्सन प्लीज टर्न ऑफ द ऑडियो, द ओनली पर्सन हु इज स्पीकिंग विल स्पीक। लाइक इन्फ्लेशन किया तो मैंने उसके पीवाईक्यूज देखे तो वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं मतलब 10-15 डेज बाद मतलब सोचता हूँ कि वो टॉपिक क्या था, तो मतलब उसी में कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं से ये क्वेश्चन तब तो हो गए थे अब नहीं हो पा रहे हैं। So that's revision ना, that's revision, that will keep happening। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आप रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस एक बार ABCD सीख लिया तो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं उसको, है ना? तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसको भी रिवाइज करना है, एंड कीप डूइंग द क्वेश्चंस ऑन इट। ओके, नेक्स्ट। Hello, ma'am. Lima was Lima. I'm Lima here. Yeah. Ma'am, I have the same kind of doubt. मैंने मृणाल सर के वीडियोस से स्टार्ट किया है, फ्रॉम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है, एंड आई एम इन सेबी शेयर मार्केट वाला, आपको पता होगा वो फर्स्ट पिलर में जो आता है दैट। बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ दैट आई एम नॉट एबल टू, या फिर जब रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ तो मैं वो M0 M1 और मार्केट सप्लाई वो एकदम से याद नहीं आ पाता है। लाइक आई कैन नॉट रिलेट विथ कि अगर बैड है या बैड बैंक है ये हो रहा है तो इससे मनी मार्केट या मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस आ रहा है, मैं नहीं रिलेट कर पाती हूँ। तो मे बी अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो आई शुड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस और आई शुड रिवाइज मोर एंड मोर। इतना ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, बैड लोन्स हैं, ठीक है, बैंक अपनी जो उसकी बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं NPA हो गया है। हाँ। अभी वो और उसको कितने सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, बेसल नॉर्म्स हैं, फिर RBI ने कुछ चीजें कर रखी हैं, इशू है, SLR वाला इशू है, बहुत चीजें हैं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो पैसा कैसे सर्कुलेट करेगा इकोनॉमी में, है ना? हाउ लेंड, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से लिक्विडिटी जा रही है। तो इस तरह से ये तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, मतलब आपने बेसिकली जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स है ना, जो डिमांड सप्लाई का जो बेसिक है, इकोनॉमी इन माय ओपिनियन स्टार्ट्स विद इक्विलिब्रियम ऑफ, व्हाट आई एम सेइंग इज यस मैम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, उसको करो। दैट शोज कि आपने जो उन्होंने जहां से शुरुआत की थी ना, वो चीज नहीं है। गो रिवाइज दैट, वॉच दैट वीडियो अगेन,
Okay. Okay, हाँ. fine, ma'am. You have to get it connected. अगर कहीं लग रहा है आपको चीजें connect नहीं हो रही हैं, then you have to revise that concept again. Okay, ma'am, fine. Maybe that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Yes, who's? Hello. हाँ. Ma'am, I'm Satyanarayanan, ma'am. Huh. Ma'am, I'm planning to pursue my UPSC in the year of 2025, and Okay. currently I'm working. Is there any strategy for working professionals like me to pursue an UPSC? What's the plan for that? I do not have first-hand experience of working wala, but I have friends who were working. So the thing is, they used to do is कि आपका अगर Saturday Sunday off है, if you Ma'am, I'm sorry to interrupt, ma'am. I don't know Hindi. I'm from South India. Sorry. Okay, I'm very sorry. So if you get any weekend off or any day off, then you have to put 200% effort that day. And rest of the days you have to at least do newspapers, you have to at least do your syllabus daily. Matlab, like if you have started just now, you are attempting 2025, then I believe ma'am. that you would be getting this much time that at least you can do your syllabus, like download that and understand what this exam is, understand what this syllabus is, so that you can do normally. That newspaper in bits and bits you can do across the whole day. Then whenever time permits, start your optional, do at least one topic in a day, like not whole topic, but at least one subtopic in a day. Make small Okay, targets that you can complete in Okay, every day, very small targets. And then whenever a weekend comes or whenever a holiday comes, then give your 200%, read whole day, do whatever you want. Okay, ma'am. This is what my friends used to do most of the times. Good So evening, there ma'am. is a possibility of clearing examinations. Huh? So there is a possibility of clearing the UPSC. Of course, yeah, there's a possibility. That is why this exam is happening, na? Of course. Okay, ma'am. Okay, Dharma, please Okay, ask. thank you. Ma'am, good evening, Sharma Taylor. Ma'am, can you please say the tips regarding the mains, ma'am? Means how to write the answer writing like that? Or shall we prepare only for prelims, or shall we prepare integratedly for both? See, that depends when you have to appear. If you are appearing in 2024, then you have Ma'am, to I have already cleared prelims, ma'am, but I am unable to, means I have lost this time mains, ma'am. Okay. See, you can go to Civilsdaily and there's a video that I did. It was on answer writing. Okay. So go to that section and there I have told in detail how you can do answer writing wala part. Okay. Thank you. Vaibhav, please ask. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, मेरे साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए मैंने कोई भी प्लान सेट किया कि जैसे कि आज के दिन मतलब कि इतनी पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक कवर करना है, तो मैम ये हो नहीं पाता. उसके बाद मैम फिर मान लीजिए कि एक हफ्ते लगातार मैंने पढ़ भी लिया, तो उसके बाद फिर 2-4 दिन मतलब खाली चला जाता है. ऐसा क्यों? ये तो आपको पता होगा ऐसा क्यों. This is problem. मैम इसको मैनेज कैसे करें मैम? कंसिस्टेंसी. देखिए बात यह है कि इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, इनकंसिस्टेंसी विल नॉट कम एवर. अगर कभी आती भी है तो दैट्स फाइन. मतलब मेरे साथ भी बहुत रेयर होता था इनकंसिस्टेंसी वाला इशू, मैंने कभी वैसे फेस नहीं किया, बट कभी मान लो हो गया तो फॉरगिव योरसेल्फ एंड नाउ व्हेन यू आर ऑन द टेबल बी देयर 100%. नाउ व्हेन यू आर अगेन जंपिंग बैक, लाइक बी देयर 100%. ठीक है, इस पे क्रिब नहीं करना है कि आई एम नॉट इनकंसिस्टेंट, आई एम नॉट इनकंसिस्टेंट. डोंट क्राई अबाउट इट, जस्ट गेट अप एंड सिट ऑन द टेबल एंड स्टार्ट रीडिंग. दैट्स ऑल. जहां आपको लगता है यू आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द गोल, प्लीज रियलाइज कि आपने क्यों स्टार्ट किया, वो डे 1 क्या था, क्या मोटिवेशन था, आज आप कहाँ खड़े हो. तो थोड़ा इंटरनलाइज करो, रियलाइज करो कि क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं, और वापस से जाके टेबल बैठ के पढ़ने लगो. उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन ये नहीं होता है कि आप YouTube पे जाके वीडियो देखते हो एंट्री की, एग्जिट की, ये सब चीजें, इन सब से कुछ नहीं होता है. जाके बस टेबल पे बैठ के पढ़ने लगना होता है. ओके. एंड मैम मुझे थोड़ा सा ऑप्शनल के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है
मुझे हाँ। हिंदी लिटरेचर मैम अच्छा लगता है थोड़ा सा पढ़ना, बट मैं बाकी सारे एग्जाम्स इंग्लिश में देना चाहता हूँ, तो लैंग्वेज की कोई इशू नहीं होगी ऐसा फिर से रिपीट करो क्या? मैम मुझे हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मेरा ग्रेजुएशन में भी हिंदी लिटरेचर है। हाँ एंड मैम मैं बाकी पेपर्स जो है कि इंग्लिश में देना चाहता हूँ, ठीक तो है। मैम इधर कोई इशू नहीं आया होगा ना कि मतलब कि राइटिंग या फिर स्पीड? नहीं, आई डोंट, क्यों होगा? वो तो ऑप्शनल एक अलग ही चीज है। वो आप हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं तो आप उसी में लिखेंगे, बट इफ यू वांट टू राइट जीएस पेपर इन इंग्लिश तो आप वो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर एक बार यार देख लो, पता नहीं, मतलब इशू तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑप्शनली जब हिंदी लिटरेचर है तो आप क्या उसमें इंग्लिश थोड़ी लिखोगे। ओके, थैंक यू। ओके, विष्णु आस्क। Yeah, madam, +1 and +2 economics NCERT plus Ronald sir videos, are they sufficient for economics, ma'am? I would say only Mrunal sir's videos are also sufficient. But if you really want to do NCERT, then 11th, 12th NCERT you can do. That is more than sufficient. One thing, ma'am, last thing, ma'am. Madam, can I know where you have taken coaching, ma'am? I did from Vajiram. Institution name. I did from Vajiram. Madam, 1 year program or 2 years program? I did 1 year. Matlab, that was not even 1 year, that was just 9 months. Yes, ma'am. Okay. Madam, one thing, ma'am. Sorry to disturb you. Madam, can I ask you, ma'am? Ask. Madam, actually, while we are by the end of the program, they used to conduct the session for 5 hours along with that optional. How could we tackle the examination in 1 year, ma'am? If the classes are being conducted nearly 6 to 8 hours in a day. Correct, I understand. See, if you join any coaching or that is one of the trade-off. Ki aap class mein, most of the times you are in class, Yes, ma'am. and then there's less time for self study. So what I used to do, I used to do best use of my classes, and I would not waste any time. Like if I'm standing in the queue for sitting, then in standing in the queue I will read something. When I enter the class, the teacher has not arrived, I will revise the previous lecture. Now when the teacher is teaching me something, obviously that's valuable, right? That Yes, is not, that is time investment. You are getting to know new knowledge that I will grasp very nicely, very obediently, very sincerely. Then when the class is over, when I will be coming my home, then in my mind I will be revising whole lecture. So when you get out of the class, you take 10 minutes to walk to your PG. Then that should be wasted. I didn't use to waste any time. That time I used to revise in my whole mind what was the lecture all about. Then so this is investment of time. Don't think you're wasting time. Okay, and rest of the self-study time, you have to plan it this way, because you know that if you have joined coaching, that's your decision. Invested money and you are there to get the full out of it. So you plan accordingly and do as much you can do about it. Ma'am, one last question, ma'am. My sincere apologies to you, ma'am, if it is wrong. No. Yeah. Because I got stuck in a cumbersome situation. That's why all the doubts are erupting in my mind. Ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, after can I know how you have taken coaching, ma'am? That means after completion of coaching, 1 year you have dedicated for revision, or parallel to that you have given the very first attempt, ma'am? See, I gave my very first attempt in 2018 itself. My coaching, it ended just 15 days ago before the exam of prelims. So I basically had literally no time to revise a lot. So what I used to do, I used to revise the whole year. ऐसा नहीं था कि let's just first finish the syllabus, then I will revise. So I revised it simultaneously every time. And my coaching got over in end of May, and in June 4th was my exam, first attempt in 2018 that I gave. And then I could not clear that by 4 marks. So when I gave my next attempt, then again that was only revision that you have to do. So you have to take a call. Like a lot of people, they don't give attempt when they are in coaching, but I don't suggest that, because your first attempt is the most the beautiful attempt that you can have. That you
are very versatile, very dynamic, very enthusiastic in your first attempt. So don't let it go waste. You can give Yes, it. ma'am. Okay. Madam, Madam, some people, especially the coaching institutes, use it to pressurize the students that if, their books are sufficient, no need to read other NCERTs, Spectrum. Ma'am, is it true? To what extent it is true, ma'am? I cannot And comment upon any coaching institute here. The thing is, see, even if they are telling you, even then you will read those books, reference books. Although coaching materials are made with a lot of precision. They have, if you are doing one book for modern India, they have done 4 books for modern India, and then only they have material. They have decided their material. So they do put a lot of efforts. But since it's a psychological game, you will definitely do Spectrum on your own. So no matter what they say, you have to do. And basically, it's your choice. It's your decision. yeah, ma'am. Otherwise, Thank you, ma'am. coaching, they do put a lot of effort in making these materials. Ma'am, one last question, ma'am. Sorry. I think it's become your, monologue. Ma'am, sorry, last question. Last Yes, question. Madam, Spectrum is sufficient, ma'am, for modern Indian history. No need to go for other NCERTs. Is very much sufficient. That's your last question, okay? Okay, thank you, ma'am. हेलो मैम. Yes, ask. वैष्णवी हियर मैम. अगर मैम हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इवैल्यूएट कैसे करें, टाइम टू टाइम कैसे इवैल्यूएट करें? Evaluation of what, prelims or mains? For both. The best thing is you have to solve previous year questions in prelims. If you're able to solve the things, if you're able to relate to the things coming in newspaper also, then you are doing good. And similarly for mains, if you're able to you have to read toppers copies. If you're able to understand how they have written, what would you have written, if you're able to match their pace, if you're able to complete answers in time, if ideas are flowing in multi dimensions, then you are doing good in mains. So these are the parameters you can check on. ओके. और मैम टॉपिक वाइज अगर मतलब हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, उस पे अगर हमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू चाहिए तो फिर पूरा पेपर मतलब नहीं आता है, तो फिर कैसे मतलब कैसे उसी टॉपिक के एमसीक्यू निकाले हम? I see previous year questions I had of Arihant. Okay. And in Arihant we had year wise, like 2022, 21. So year wise, quickly you can check. Like if you have done some topic of fundamental rights, then year wise you can quickly see what question has been asked from fundamental right. So that's okay. क्योंकि इतना precision के साथ तो कोई नहीं बनाता previous year question. You can buy year wise वाला and you can search for the topics. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. My doubt is related to how to make notes. Like हम topic wise बना सकते हैं notes. Suppose एक topic हमने geography का ले लिया, तो plate tectonics, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? Like topic wise लिख सकते हैं कि पूरा geomorphology हो गया, उसके बाद हम लिखे, या फिर second या third reading में लिखे? Like कैसे हमें note making करनी होती है, मैम? अच्छा. See, so plate tectonics is a part of geomorphology. ठीक है? So I would say one reading जब आपकी होती है full geomorphology, then you understand what is inside Earth, what happens when they come out, the material when it comes out. तो basically geomorphology क्या है? अंदर से जो चीजें हो रही हैं Earth के, and till the time they are coming out and they are forming some structures. This is all geomorphology, right? So I would say when you have done 2 readings at least, then only make notes of anything. Because you will make notes in silos. That is not required. You have to understand completely, comprehensively. That will happen in 1 or 2 readings. Then only make notes. Okay? Okay, ma'am. And ma'am, I just wanted to ask you related to current affairs. Like मैं editorials और current affairs कैसे हम हमारे आंसर राइटिंग में ऐड करें, क्योंकि एवरीडे करंट अफेयर्स आर अपडेटिंग, राइट? सो उसे हम लाइक जीएस का सपोज ये ज्योग्राफी ले ले, तो ज्योग्राफी के साथ हम एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स कैसे उसको मर्ज करके पूरे एक आंसर लिख सकते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हमें इतना याद नहीं होता कि ये करंट अफेयर्स का ये जो इसके अंदर ऐड होगा, या ये एडिटोरियल्स का ये है ये इसके अंदर ऐड होगा. तो मैम वो हम
याद करें और कैसे हम वो आंसर See, लिखें? you have to make notes of current affairs. I have told that repeatedly. Even if you're not making notes of static, you have to make notes of current affair and revise it every day. Revise it before making notes of the second day. First revise the notes of first day. So that way you will have everything in your mind, and now when you are attempting your answer, everything you will recall. Take for example, Joshimath, is in news. So part of geography attached to it. आपका terrain की बात आती है इसमें, then some plate tectonic activity इसमें आती है. So this way you are relating Joshi वाला current affair to your core geography. So what you have to do, you have to make notes every day, revise it every day, and then only things will flow when you're writing answer. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. So I have two questions. One is when we talk about first reading, second reading, and third reading. So first reading, does it comprise that complete all the subjects at one go, and then do the second reading after completing all the subjects? Or does it mean that you complete Lakshmikant, for example, in 10 days in the first reading, then next 7 days, and then third, you do it together? No. What I used to do, first reading of one book, another subject, do first reading, and the first subject will go in revision. Basically, like if I have done R.S. Sharma, one reading, now I have picked Satish Chandra and I am doing first reading, then every day I will do R.S. Sharma ka revision for at least 30-40 minutes. So this is my second reading of R.S. Sharma. So I'll repeat this for everyone. See, first reading doesn't mean कि आपको हर एक subject एक बार पढ़ा और फिर दूसरा शुरू किया एक बार. The thing is, first subject you have to pick second subject, and the first subject goes in revision mode. Similarly, you have to do for all subjects. Okay. Ask. Okay. So which means you're saying that the second reading has to be done simultaneously with the first reading of the next subject. This is how you have to allot time. Yes, correct. Right? Yeah. Okay. And second is when it comes to Hello, good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. I am doing my honors from B honors from political science. I am in third year. So, ma'am, मैं 24. You have turned off your mic. उसमें सही स्टडी रहेगी तो 2024 के लिए. अब मैंने 2024 के लिए ही तो स्ट्रैटेजी बताई ना अभी पूरी. अरे मैम थोड़ा लेट बिजी था थोड़ा. See, I cannot tell whole strategy in Q&A session. I think this whole session is recorded. You can get it and. ठीक है. मैम अगर मैम कौन से सब्जेक्ट्स तो मैं कवर कर सकता हूँ, मतलब पॉलिटी एंड हिस्ट्री. You're in college right now? Yes, ma'am. I am in third year, ma'am. So you can start with your polity. It's a subject आप समझ आ जाएगा. आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लो. इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कर सकते हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन डू. ओके. और मैम करंट अफेयर्स के लिए क्या रहेगा कि मैम न्यूज़पेपर भी मैम करा जाए या मैगजीन्स भी देखी जाए मैम? तो दोनों ही देखना है आपको, इसमें कोई ऑप्शन थोड़ी है. न्यूज़पेपर तो आपको करना ही करना है. देखो अभी सिंस यू आर इन कॉलेज you can start with newspaper. You will not understand of things, but you have to do some background research. So start with newspaper. बाकी का आगे मैगजीन का देख लेंगे जब आप you will come in preparation. Yes, मैम रीड टू मैम टोटल भी मैम कर रहा हूँ ना, हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. मेरी मैम ज्यादा कौन सा सही लगेगा, इंडियन एक्सप्रेस की मैम द हिंदू मैम कुछ ऐसा है? देखो मैं द हिंदू पढ़ती थी, ये आपका अपना चॉइस है. आप एक हफ्ते दोनों को पढ़ के देख लो जो आपको बेटर लगता है. आई यूज्ड टू डू द हिंदू. ठीक है. So I'll end up this session now. It's already very late. So Civilsdaily, please, shall I end it or we have something? Do we have to say something? Any staff? Civilsdaily staff? Yes, ma'am. We staff here. Hello. So we'll end the meeting here. हाँ मैम, stop कर देते हैं.
All the best, everyone. Please do justice to your whole career and read very hard, very smart. Okay, bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you.